वो चेंज कर दो हां देखिए सेंटर the central processing unit. First we have to discuss about the central processing unit. It is also called as the processor. In the computer Geneva, first of all we are asking for the processor. So currently we are using i3, i5 and i7 processor. And how you compute that particular computer speed? For a computer speed हमें केमती calculate करिवा? तो सेति ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମେ define କରିବା ଗୋଟେ clock speed ଗୋଟେ ଅଛି. The clock speed means what? In 1 second, how many instructions you have to process it by in the computer. Okay, so from that we have to evaluate the fast and slow of your computer. Computer fast चलुची कि slow चलुची, right? से हिसाब रे कौन करा जाए? हमारा processor का define करा जाए. तो सेवटू ही concept असला i3, i5 processor, ये जो processor हमारा सब define करा. बुझिए? It is called as the process. It is called as the processor, central processor or microprocessor. It carries out all the important function of computer. It receives the instruction from both hardware and active software and produce the output accurately. In our body, our brain is called as the what? Processor. Okay. All the like taking the food, digestion, and moving that component to our body. It is defined by the what? Brain. The similar way, the computer is working through the IPO cycle. So, what are the input you are given? It is process the information, and where it will be produced the output is defined by the process. What is the download for your file? It is asking you that do you want to download the file? When you want to delete a file, then it is asking you, do you want to delete a file? So it is asking some kind of question. The processing is happening like calculation, some kind of step-by-step evaluation, some kind of processing is happening. It is asking you the question, what is the next course of action? Okay. It then perform the calculation, manipulate the data, and produce the output based upon the instruction. It store all the important program like operating system that manage the computer resources, allow you to interact it with the application software, and use the perform and that used to perform the processing and web browsing and game. The processing, it means what? It is evaluate the resources. The resources हमें क्या करेगा? जैसे कि computer, it is not working on the basis of only keyboard and mouse. Lot of resources are there. Like for storing the information is very important. Okay, so based upon the storing the information, our hardware is again divided into the primary memory and secondary memory. Which memory store in the primary memory? Which data will be stored in the secondary memory? It is decided by the जेତେବେଳେ हम कंप्यूटर स्टार्टअप हबो जो प्रीरिक्विजिट स्टार्टअप ପାଇଁ जो प्रीरिक्विजिट इंस्ट्रक्शन सब दरकार तो प्रोसेसर को करिवो से प्रीरिक्विजिट इंस्ट्रक्शन को फाइंड आउट करिवो where the instruction is present, it is present in the secondary memory जोठी कि हमें permanently information store करिवो मानि नियो घरे तमरे जेतेବେଳେ रोसई होची okay so when the mother is cooking at the time of making it tea you require 2 spoon sugar. Okay, so it is not happen that every time if you require to preparing a tea and you are going to the shop and asking for the shopkeeper, तो भाई 2 चम्मच चीनी दो, सिको भाई तो पिकारीटा मागु, सेमिति मागु जे न चाखिया में न, तमे जे सब दिन मागी को भाई 2 चम्मच चीनी दो केते टका, सिको बेटा पागल, तो हमें आनिबा चीनी केम जानिबा, चीनी जेटा हमसे in the basis of केजी,
केजी विषय रहले ताको स्टोर करले डब्बा रे तापर हमर रिक्वायरमेंट हला से चीनी को काढी के हमर जति की चम्मच दरकार हम ताको ऐड कर तो चीनी के हम कोड स्टोर करे अन्य एटा हमर हला सेकेंडरी स्टोरेज मोर रिक्वायरमेंट हैला कोडी रिक्वायरमेंट हो चा बने पे चा जो पतिला আছে ता भीतर मत केवाला तो 2 चम्मच मुता करे पके okay so where you processing that is your code area okay for conducting the classes I require to see okay where to conduct which classes it is defined by the student side okay एटी क्लास ओवर the next class out a room so सेमती कोन हुए ना जते बळे हमें lot of instruction when we are storing in the what computer devices which program execute in which memory it is decided by the what processor अच्छा सर आप तो बोल रहे हैं सुविधा तो देखा लियो तो मैसेज देखो कितने सुविधा तो काय तो जगह की नहीं बुझेला पहले प्रोसेसिंग तो भी हमें कहबा storing the information till retrieving the information all the things is defined in the process CPU also help input output device to communicate with each other when mosquito is biting you okay at that time your nerve is giving a what instruction to your brain okay to attack the mosquito okay how jodi soiba purburu jodi mosha attack kari brain कहबो जे पर्यंत तुम न मारिछ you are not getting that kind of attack मार दो हां जंग जीत गया okay the similar way the brain set पर्यंत satisfied न पाइबो जे पर्यंत मशा को न मारि तो सोई थिबो त भाई तू भलो सोया को अछि तू जा मते दया कर okay the parrot रे थिबो सावधान पोजीशन थिबो parrot आगे नहीं हां प्रथम तले तो parrot थिबो सेठी मशा कामुला दादा ने तो किछि करियो बनी so see that the brain is doing the work on a different situation okay so same situation na hela मशा कामुरिबा हमें react कले different way तो हम ब्रेन टा कम्युनिकेट करछ से बळे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से काम जेतो देखो कोन से जिंस प्रिंट आउट करिवार अछि से मॉनिटर रे प्रिंट आउट बाहर करू प्रिंटर रे बाहर से जानु छी जे मु कोठी इंस्ट्रक्शन देले को जगह रे मोर आउटपुट आसे स्कैन करी जेते बाय ऐसे स्कैन हो डिसाइडेड विथ द सेंट्रल प्रोसेस ओके किसी जिंस विजुअली डिस्प्ले करी तो मॉनिटर दरकार प्रोजेक्टर दरकार सेठी डिस्प्ले करू तो ये जिंस जोटा मु विजुअलाइज करू प्रिंटर रे बारे सरी रहा okay so ei सब management these are the management is happen or the taking the input processing and generating the output all these thing is happen or it is happen by the CPU also help to input output device to communicate with each other the CPU translate the input when you click move the mouse or click on a key on the keyboard and work and it works with the relevant software तो ये प्रोग्राम गोटे जतबे हमें गोटे कंप्यूटर यूज करू छे दी प्रकार सॉफ्टवेयर हम प्रकार रहू छी गोटे होची सिस्टम सॉफ्टवेयर गोटे होची एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर रा काम कोन कंप्यूटर को चलीबा पई जो सॉफ्टवेयर दरकार सेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके ता सेटा हमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे हमें किछि सॉफ्टवेयर स्टोर करू जेंति कि मते दरकार ऑफिशियल वर्क करियार अछि तो वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड डॉक्यूमेंट मते स्टोर करियार अछि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनियार अछि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दरकार sending the messages to the group of people WhatsApp software so requirement based upon the requirement I'm installing the software okay the similar way the coordinating that software if software ta hamara device se integrate hobo ki nahi हम देखो iPhone ने किसी apps गुड़ा का काम करे और जोड़े कि हमारा ये रे काम करे Android रे काम करे इसी इंसा restriction था APK file गुड़ा का जो हमें install करेगा it is giving you the notification or warning in your device तो ये सब insert ये करे ना central processing unit coordinate which software is relevant to your application software system software and which is harming your system software यदि damage हो ताले हमें कौन सी function कर पाएगा CPU ensured that the input and output device communicate without any trouble whether it means printing paper playing music audio showing the text displaying the screen the CPU is installed in the CPU socket
Okay, तुम मदरबोर्ड रे गोटे CPU सॉकेट रहइबो ताको गोटे कवर एकी गोटे जंपर दिबो से जंपर रे ताको स्टोर करी रखो। ओके तो आगो से जो CPU ता जतरा हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे हम देखिबा सेरा गोटे गोटे बड़ बड़ वैक्यूम ट्यूब बा कैप्चर नॉइज प्रोग्राम। ओके आउ से जो कंप्यूटर रो ओजन मात्र 30 टन पेलोड लेते उठिलो। ओके तो से गोटे कंप्यूटर जदी हम गोटे किनिबा ताले जदी दीटा सिस्टम हम किनिबा ताले हमर सपोर्ट लेडी चलते पिला रहबो जगह रहबो। ओके तापर कोन होबो 2000 स्क्वायर फीट नंबर दीटा सिस्टम एंड 1000 स्क्वायर फीट से नउची गोटे कंप्यूटर को हम इंस्टॉल और 30 टन से तबे एजे उठेबा सरियोला पड़ता क्रेन क्रेन दरकार। ओके एंड अनदर चैलेंजिंग थिंग इज व्हाट यू हैव टू मेंटेन द कूलिंग ताको पूरा चिल्ड करियो रहयो। और तमे जदी कंप्यूटर किनिबो एटा घोड़ा किनला वाले समझ देखो मी कथा रे अछि घोड़ा छोटो न दाना इज लाइक दैट। ओके ने गोटे सिस्टम किनिबोनी तापे चारटा एसी रो चिंता करो इन द ईयर ऑफ 1914 से समय एसी लगेबा और 30 टन सिस्टम को आनी कि 2000 स्क्वायर फीट जगह रे इंस्टॉल करियो हम हाउ चीप इट इज। बे घरे घरे हम एसी लगो से समय एसी लगे 1914 में से एसी ता स्ट्रक्चर कोन की करे हां एसी चारटा लगेबो और तापर जे गोटे घर दरकार मौसम होया पर जगह ने सिस्टम रखे पे जगह। Okay, so that processor is reduced. Now what happened? Now we put our computer in our pocket. Yes or no? Computer pocket of the food. बुझे ना कांदरे पकड़ी कॉल एबे मु कोई CPU दिखा नहीं की करो देखियो बुझियो it is all about your central processing unit, right? छोटो अछि डाकी दउ it is also called a processor. It is also called a processor. Central processor or microprocessor. Central processor or microprocessor. Next word. It carries out all important function of a computer. It carries out all important function of a computer. और मैं ऑडिबल होची ना आज्ञा सर ऑडिबल अच्छे next point it receives the instruction from both the hardware. It receives instruction from both hardware and active software. Active software and produces the output accordingly. And produces the output accordingly. It performs. Next one. It performs calculation, manipulates data and produces output based on instruction.
It stores this one. It stores all important program like it stores all important program like all important programs like operating system, which which manages the resources, which manages the resources that allow to interact with application software like word processing, web browsing, and gaming. It also helps input and output device. It also helps input and output device to communicate with each other. To communicate with each other. Next point, it ensures the input and output device communicate without any trouble. It is installed on CPU support. Hello. Class and CPU is installed and inserted. CPU is installed and inserted into a CPU socket on the motherboard.
Again, CPU is divided into two parts. Okay, the bujhaga. The CPU टा केवल हमें इधर जो जिनसा पढ़े ले, इधर होची CPU रा काम. The CPU रे again आरो दुईटा part रहइबो, गोटे होची control unit, आरो गोटे रहइबो arithmetical logical unit. Okay. Control unit is a vital part of central processing unit and it is accountable for overall performance of for a computer. It is a circuitry that the control unit which make the use of electrical signal to instruct the computer system for executing already stored instructions. It is actually works like a translator. So whatever the instruction you are stored, that is a software. Computer doesn't understand any kind of programming language or any kind of software that you have to install. It only understands the 0 and 1 format. केवल 0 1 भाषा को से बुझी परिबो, अन्य सॉफ्टवेयर तमे जहां भी इंस्टॉल करिवो से बुझी परिबो नाही. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करिवो से जो सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल रे को कन्वर्ट करिवो 0 and 1 बाइनरी फॉर्म रे कन्वर्ट करिवो. जोटे के हम लिखुते 0 टा हो जे ऑफ स्टेट करे हम कहिबा और 1 रिप्रेजेंट करिवो ऑन स्टेट. तो जहां भी इंस्ट्रक्शन हमें प्रोवाइड करिवो कंप्यूटर को से ऑफ एंड ऑन रे कन्वर्ट करके 0 और 1 रे से कन्वर्ट करके हमको एग्जीक्यूट करके इंफॉर्मेशन सो. It takes the instruction from the memory, decodes and execute this instruction, so it is control and coordinate the function of all part of it. So any software that you have to install, it is executed by the control unit. Execution means translation, conversion and providing you the output. Okay, so that is the responsibility of central processing unit. So first, the control unit main task is maintain and regulate the flow of information across the processor. Processor work is what? Processing your information. But to provide the instruction to the processor, the work is done by the control unit. Okay, so amar kon asibo na blood gale ma heart ro kon asibo ta blood jauchi se puni purify he ki amar sabu body ro anena part to सब jauchi. तो जो purification के करियो heart रो ही हो. The heart को किए नहीं किसी ये वेसल सब दरकार. तो ये कंट्रोल यूनिट से काम करते हैं. से प्रोसेसिंग करियो, स्टार्टअप करियो. से प्रोसेसिंग करके तापर पहुंचेइबो से काम करियो ताको प्यूरिफाई करियो. तम पाख को इनपुट आसीले ही मु प्रोसेसिंग करियो. तो से जो इनपुट ताको नेकी पहुंचेबार काम होचे कंट्रोल यूनिट रे काम. It serves as a traffic controller, ensuring that information and instruction are efficiently transferred among the various elements of the computer system. तो जेमति तमे देखु छ जेतरे तमे ट्रैफिक रे जाउ छ तो सब साइड माने क्लोज रहउ छ गोटे साइड रे लोक जाउ. तो सिमिलर वे समटाइम्स हैपन दैट जेतरे तुम्हारा रिजल्ट बाहरला एवर सर और टाइम डिफाइन करा गला ए टाइम रे तुम्हारा रिजल्ट बाहरे एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग अ रिजल्ट. तो तुमको टिके डिले लगेगा बुझी होती तापर तुम्हारा आस्ते आस्ते तुम रिजल्ट देखेगे. जितना सपोज रिजल्ट मोर डिफाइन होगा at 5 PM रिजल्ट will be declared. So at the same time all the students that is not present in हमें यदि कोई बार टोटल CBSE बोर्ड को नो not present in Odisha all over the India they trying to access the CBSE server. So think about that. What is the pressure on the server? The server cannot handle that kind of pressure. Okay, so previous classes में कोई भी तो Flipkart का था कोई, पहले Flipkart, हम big billion day चले Flipkart, तो big billion day जब तक प्रॉपर Flipkart launch करा, से हमारे Flipkart server तक क्रैश है. Flipkart is not expecting that all the Indian people are crazy to get the items on the Durga. से normally big billion offer देला हमें इतने crazy है क्यों लोग मोबाइल यहाँ पे इतने ऑफर ऑर्डर करो से इतने प्रेशर नॉट नहीं की तो सर्वर तक क्रैश है. तो सिमिलर वे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करिवो जिते बेले हमें सब रिक्वेस्ट पठेबा
से रिक्वेस्ट को से काम करिवो गोटे क्यू रे आ देखो को यूनिट रे केते एक्जीक्यूट होबो से से डिसाइड थिंग इज व्हाट लाइक जेतर तुमे जाउछो सैलून जाउछो छुट्टी कटिया रे ओके जैसे पर तुम लाइन रे बसे भाई तोर नंबर है तू आ पर आसी तू आ पर आसी तो जे परंत तका बन असरती भाई तुम वेट करके पेपर करतो ना मोबाइल मार के गेम करतो ओके सर इट जस्ट लाइक दैट अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही आपको ही कंट्रोल करे को प्रोसेसर केतल काम करे बेले बेले तुम कंप्यूटर रे काम करदियो गोटे फोल्डर ओपन करिवो कि मैं जेतबे तुम्हारा मोबाइल रे काम करदियो हठात ऊपर तुम गोटे गेम गोटे हाई कॉन्फ़िगरेशन गेम खेलुछो से समय में व्हाट्सएप ऑन करियो से ओपन होगा पूरी क्लिक करियो से ओपन होगा तापर सब जगह आप पूरा का सब काढी के तापर ओपन करियो ओपन फोल्डर जेतबे तुम ओपन करियो चाहो सिस्टम रे तुम क्लिक करियो ओपन होगा पूरी क्लिक करियो ओपन होगा काहे कि ना सीपीयू से तुम बिजी थीबो रिस्पोंडिंग टू अदर वर्क केमती वर्किंग करथिबो सीपीयू पूरा ताको फोकस करियो अब तुम जेतबे सेतबे ताको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करियो जे मो फोल्डर टा ओपन कर से तुमको अलाउ करियो till that process is not over there is stopping over हठात तो देखियो तुम जेते थर से फोल्डर टा को क्लिक कर दियो हठात तुम सेटी की तरह से फोल्डर टा ओपन हो दियो से पहले पूरा धड़ रहे that means at the time of you are providing the instruction like when you click on anything that means it is processing okay when you click any object in the computer that means it is a processing and when it is happen again and again and computer CPU is busy in the other work then when it is free it is open or okay so it is a traffic control and it manages all the instruction of the which way it doesn't take part in the processing and storing the data instead of serve as an overseer coordinating the action of the other CPU part to guarantee the instruction is carried out accurately and in the right order. तो ये प्रोसेसिंग करेगा ये कंट्रोल करेगा द कोऑर्डिनेटर ओके ये कोऑर्डिनेट करिवो जे मते इंफॉर्मेशन ए जगह रे पहुंचेबार अछि एंड ऑल द पीपल्स आर गेटिंग दैट थिंग्स ऑन यदि मते कहलो आई एम कोऑर्डिनेटर मु तुमको गोटे गोटे क्लासेस पे बसो तापर मु एनसीएल करूची से क्लासेस रे से वेरे से क्लासेस होचे कि नहीं तेरा मु तुमको एनसीएल करू so CPU the control unit work is just like it is a working as a coordinator it is not taking part like I am not taking all the classes at the same time I am taking one class at a time but other three classes are conducted I am ensuring that the teacher are present and they are conducting the classes or not so they are coordinating okay the control unit रे काम होची कोऑर्डिनेशन करिवो और इंफॉर्मेशन को राइट जगह रे आपको पहुंचा बुझेला तो देखिबा हेडिंग द कंट्रोल यूनिट तमने बुझेला yes sir तमने किसी डाउट अछि भितरे ना sir doubt तो नहीं देखो कंट्रोल यूनिट is a vital part of central processing unit and is accountable for the overall performance of a computer. Overall performance of a computer. It is a circuitry. It is a circuitry. CIRCUITRY. It is the circuitry in the control unit
which makes use of electrical signal to instruct the computer system for executing already stored instructions it takes the instruction from the memory. Then decodes and execute these instruction. Code and execute this instruction. It controls and coordinate the function of all parts of the computer. Hearing. जैसे वो नहीं रखा हाँ बटे तो आपका उस आगे हाँ कौन रखे पहले वो कौन सा रखे The control unit main task. The control unit main task is to maintain and regulate the flow of information. Across the processor. It serves as a traffic controller.
It serves as a traffic controller, ensuring that information and instruction are efficiently transferred among the various element of the computer system. Various element of the computer system. But it manages the order in which it manages the order in which instructions are executed and synchronizes the activity of various unit, within the CPU. The next part is arithmetical logical unit. ALU. The short forms were said. CU, control unit. ALU, arithmetical logical unit. The arithmetical logical unit which carries out the arithmetical and logical operation. Arithmetical means that calculation, addition, subtraction. Logical operation means it is asking you that delete the file, question answer yes and no. Okay. So included the list of arithmetic operation are addition, subtraction, multiplication, division, comparison, data selection, merging, okay, and primary logical operation. More than one ALU may be present in the CPU. ALU can also be keep track of the timer that assess the running of the computer. Computer sleeping mode. Okay, AC का जो sleeping mode हमें दो थोड़े sleeping mode दे देंगे. ऐसी समझ ऐसी चलिए तो फिर कॉम दे. Okay, logical operation it is there. Timer operation ये सब हम देख रहे हैं ALU. Sometimes a CPU may contain the multiple ALU to enhance the processing capability. Multiple ALU can work simultaneously, allowing for parallel execution and speeding up the computer time. At the time of downloading a file, you can receive the video. The parallel work means at a time you can do the multiple work by using of ALU when a CPU contains more than ALU at a time. बुझिला एका संगरे जेता मल्टीपल काम करिबा तो ए समरे हम मल्टीपल ALU करब. This is especially beneficial in the CPU with multiple cores of processor designing for the high performance computing. देखा ALU हम this is the arithmetic logic unit. It is arithmetic logic unit which carries out arithmetic and logical operation. Arithmetic and logical operation. It includes next one. It includes
list of operation like addition, subtraction, multiplication, division, and comparison. More than one ALU may be present. More than one ALU may be present. More than one ALU may be present in a CPU. It can also be used to keep the track of. It can also be used to keep track of timers. That assist in running the computer. Sometimes a CPU may contain. Sometimes a CPU may contain multiple ALUs to enhance its processing capability. Multiple ALU can work simultaneously. Multiple ALU can work simultaneously. Allowing for parallel execution of operation. Parallel execution of operation. And speeding of computation tax. Speeding of computation tax. Next class working of this.
abbreviation ଗୁଡା ସବୁ ଡାକିଥିଲେ। देखो क्वेश्चन लेकिन ना होमवर्क डाली भाई the term information refers to dash dash provide the final results dash provide the final results to the user the user आर आंसर ब्यूरो बुक रो पाइबो ब्यूरो बुक तुम डाउनलोड करि परिबो ऑनलाइन व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर size of the register is equal to dash सर प्लीज रिपीट करंतु कोन कहले